40वां डॉक्टर पी रंगा रेड्डी का सालाना प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद में वाक़ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश कुमार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मुनक्किद होगा। CME यानी ये प्रोग्राम में PG के तुलबा व तालिबात शिरकत करेंगे। इस मौके पर शशिकला प्रिंसिपल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, Dr.V. राजालिंगम सुपरिटेंडेंट सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और डॉक्टर सुपर्णा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे से ख़ास बातचीत करते हुए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट Dr.V. राजालिंगम ने मुकम्मिल तफसीलात बताई। नाजरीन आइए देखते हुए सुनते हैं। As usual, this year the annual CME program for postgraduates and practitioners are running now. It has started on 27th of October and it is a 1-week program and it will end on the 2nd November. And this is only CME program we are conducting for the postgraduates throughout the Telangana and in neighboring state like Karnataka, Maharashtra, Orissa. Every year there are around 100 delegates, but this year more than 100, around 110 delegates came. And this is a good opportunity for the postgraduates and practitioners. In this CME program, we will discuss about the latest developments in the eye specialty. And apart from the didactic lectures, we have an wet lab. So hands-on programs for the postgraduates. And we have another program is like an exam orientation for the postgraduates. Because we will teach them how to present the cases and how to face the examiners and how to answer the questions. So this is a new technique that we are introducing this time. And I request all the postgraduates and the practitioners utilize this best opportunity. And this is the best opportunity that you can mix with the faculty and you can clear most of your doubts. Thank you.